Rupen sir, shall we begin? Yes, we can. Yes, sir. So, good evening, one and all. Respected resource person for the session, Rotarian Rupen Doshi sir. Respected Principal Professor Dr. S.V. Rathod. Secretary, Rotary Club of Bombay Pier, Ms. Mithu Surti, Madam. IQSC Coordinator, Dr. Manjusha Patwardhan. All the members of Rotary Club of Bombay Pier, all my dear colleagues and my dear students. I, Ms. Reena Patel, extend a very warm welcome to each one of you for this vocational development session titled Interview, Personality and CV Writing Skills, organized by the Internal Quality Assurance Cell of our college in association with the Rotary Club of Bombay Pier. Students, we are indeed lucky to have amongst us our own ex-student to guide you all today for this wonderful session. It's indeed my privilege to introduce the resource person for today's session, the alumnus of our college, Rotarian Mr. Rupen Doshi. He has completed his BSc from Bhavan Somani College and has to his credit an MBA degree from the Jamnalal Bajaj Institute of Management. He has been the past president of the Rotary Club and attributes his dynamism and creativity to the Rotary Club, where he got amazing opportunities to grow as an individual and also to sharpen his skills. As a member of Rotary Club, he has contributed to the society through several humanitarian initiatives. He is currently the CEO at Future Tech India, which is an executive search firm handling middle to senior placements for marketing, finance, manufacturing, HR professional, among others. He is actively involved in contributing to our college with his proactive initiatives. In the past, Sir has conducted personality development session for all our students and has had stimulating discussions with our students. Sir, we feel truly honored to have you amongst us as a resource person for the session. May I now request Rupen sir to kindly take over. Principal Rathod sir, Manjusha ma'am, Professor Reena, Professor Rupa, Professor Vijay, Professor Bindu, thank you very much for having me here today. Bhavans, as you know, is not only my college, but it's also my favorite place. Can everybody see me? All the students? Can you see me? Will all the students please react? Are you able to see me? Put up a thumbs up or a okay, so Priyanka says yes, and some other people say yes. Prachi and Kavita. So how come I can't see you? Tehseen, if you can see me, I should be able to see you. That's not fair, right? So these are supposed to be interactive sessions. So why don't you switch on your cameras? I understand that some people may have problems, there'll be disturbance and stuff, but I think most of you will not have that problem. So please switch on your cameras. Just as you want to see and hear me, I also want to see and hear you. Okay. Aman Tiwari, are you there? Aman Tiwari has a very fancy photograph of his. So I want to see him. Where are you, Aman? So that's better. Please start switching on your cameras so we can see you. Yeah, education is all about interaction, right? So here we are this afternoon at Bhavan's College. The topic for today is CV writing and interview personality. The reason why we say interview personality is because it's your personality that's going to matter in the interview. Okay, there is something called interview techniques, which remain standard for everybody, for you, me, for everybody. But your personality is the one that's going to matter. Okay. However, since we are dividing this into two parts, I will start by talking about the CV writing skills. So what is a CV? So some people say resume, some people say curriculum vitae, some people say biodata. So what is this? The CV, the biodata, the resume? It is your brand ambassador. We need a brand ambassador for ourselves because we have to sell ourselves. You cannot reach everywhere
So you will send your biodata. People who choose to interview you or choose to hire you will need to know about you without meeting you, right? So therefore, we have a biodata. Now, this biodata talks about you. Remember, it's you versus the reader. And I'll tell you why it's versus. Because when you make a biodata, you have yourself in mind, right? So it's an inwardly focused exercise. We are talking about yourself. However, you are not putting into consideration what the reader is going to look for. So if I'm particularly hiring for, let's say, a fresher's position, okay, I will have something in mind. If I'm hiring for an academic position, a teacher's job, I will have something else in mind. So you have to also custom make your CV based on the reader. I'm not saying change the facts, okay, but you need to give a little bit of flavor or a little bit of bend towards where you want to go. For instance, if you're a BCom student and applying for an accounts job, and you don't have too much of accounts in your biodata, then you need to worry about that because the reader is going to look at accounts as a qualification. So it's really you versus the reader. Try and not be a little inwardly focused in this. Try and think of the other person who's going to actually see your biodata. The other thing is you can pay 500 रुपया से 5000 रुपया तक biodata writing services मिलती है. ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? So a lot of us think that हमारा इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं तो मराठी मीडियम से हूँ, मुझे नहीं आता है, ये नहीं वो नहीं, all of that. But remember, your biodata is your personality, it is your brand ambassador. अगर आप पेड बंदे को 500 रुपए दे के बायोडाटा बनाते हो, then your personality will not reflect. It will be standard font, standard format and all of that. So जैसे कि आप मेरे से बात कर रहे हो, आप अलग हो और मैं अलग हूं, वैसे अपने बायोडाटा भी अलग अलग होने चाहिए. So I would prefer if you spend some energy on making a biodata yourself. Now let me explain to you the meaning of these three words: resume, CV, that's curriculum vitae, and biodata. So resume is a French word which means summary. So that means it's a summary of you. आपकी summary है. Okay, generally एक sheet में आ जाता है. A4 size के एक sheet में आ जाता है. And it's a summary of yourself. That means आपके highlights, आपके qualification, highest first. तो suppose आप M.Com हो, M.Com ऊपर आएगा. फिर B.Com आएगा, फिर 12th standard, फिर 10th standard. Right? So even in terms of your experiences, latest experiences will come first. So a resume is generally one page और एक पेज में आपको सब कुछ फिट करना है. Areas of strength, very important. क्योंकि जो बंदा आपका बायोडाटा पढ़ रहा है उसे मालूम होना चाहिए बायोडाटा पढ़ के ही कि what are you good at, right? So ये सब resume में आएगा. Actually resume अपने context में इतना relevant नहीं है because it is for middle and senior level position. But I'm just explaining to you the concept. So resume is one word for the same document. Curriculum vitae. Latin में curriculum vitae means course of life. Therefore, a CV is a course of study pertaining to education and life. जो आपने किया है. As students of the college, you have studied and you are building your lives based on that study. So a CV is a little more detailed. Okay, it will be 2 or 3 pages long. And it will list out all your skills. मतलब आपके जो भी skills है, आपने कुछ part time काम किया है, आपके पास degree है, कोई professional association है, you're a member of this club, you're a member of that club, या law association आपने join किया या NSS आपने join किया college में. So ये सब generally chronological order, मतलब latest on top और उसके नीचे earlier assignments. So in a CV, you will have general talent being displayed rather than for any specific position. Okay. So CV is the most representative of students क्योंकि आपके पास इतना experience तो है नहीं, शायद आपने कुछ part time काम वगैरह किया होगा, but you are restricted in that space. So a CV actually displays your general talent and therefore it is preferable for fresh graduates who don't have work experience. The third term for the same piece of paper is biodata. It is actually short form for biographical data. मतलब आपकी biography. So what is that? Personal particulars के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. Date of birth, religion, sex, that's gender, race, nationality. Actually, now we don't use religion and caste anymore in the biodata because there's a lot of discrimination happening, right? So we don't use that at all. But nationality, because some companies don't want to hire foreigners, तो आपको लिखना चाहिए कि आप इंडियन है. हालांकि अगर आपका नाम जिग्नेश शाह है तो लिखने की जरूरत नहीं है, right? It's understood that you are an Indian. Then your marital status, because some people prefer
married person rather than a single person. Some people prefer single. So these are the things that you will mention in your biodata. Then you will also mention specific skills for the job. So curriculum vitae में इतना specific skills आप maintain नहीं करते हो जैसे ये biodata में करते हैं. Okay. So biodata is generally used when you're applying for government jobs in the Indian environment. You know, आप कोई research grant के लिए apply कर रहे हो, आपको biodata भेजना है. So therefore, you have a biodata. In Western countries, that means in Europe and America, we do not mention age, we do not mention gender, we don't mention religion, hobbies. But India में ये सब mention करना पड़ता है क्योंकि these things matter. Supposing it's a job with night shift and ladies can't do the job, right? So then they'll not call you for an interview, right? अगर रात का job है तो. So therefore, it's important that you mention that you're a lady, or you mention that you're a gentleman if it's a traveling job, for instance, right? So these are things that matter in the Indian environment. So आपको ये ध्यान रखना चाहिए. Lekin it's very important not to mention your religion and caste, because now all over the country, you know, we have decided that we don't want to give jobs on the basis of religion and caste. तो ये generally mention मत करना. हालांकि कोई कोई government jobs में पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं. So you need to be prepared for that, कि ये सवाल शायद आ सकता है. So now what I would like to do is, I have explained to you what the 3 types of biodatas are. I would like to share my screen and take you to what is a biodata and how you will make it. I hope everybody can see my screen. So biodata में CV में काफी points आएंगे. Okay, all those points should not be in essay form. अगर आप लंबा चौड़ा भाषण लिखते हो ना, कोई नहीं पढ़ने वाला. So try and make it in bullet form. जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे दिखता है आपको कि बुलेट फॉर्म है, राइट? आप कौन से बुलेट्स चूज करते हैं वो आपके ऊपर है, बट यू कैन चूज whichever type of bullets you want. As you can see little below, there are heart-shaped bullets I have chosen. So it depends on how your biodata is. If you're applying for a designer job, then you will do that. If you're applying for an accounting job, तो simple आप यूज करेंगे bullets. फिर fonts. Fonts में typeface. आप कौन से typeface यूज करते हो? मैंने इतने सारे बायोडाटा देखे हैं जो पढ़े ही नहीं जाते हैं. इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना ग्राफिक ऐसे ऐसे करके फैंसी लिखा हुआ है ना, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज राइटिंग. सो प्लीज ट्राई एंड यूज सिंपल business like fonts which are easy to read. Then there is an option of bold. So where will you use bold? You use bold when you want to highlight something. Okay. So paragraph का heading या आपका नाम या कोई significant achievement, that you will highlight in bold. Same way in capitals. You will put capitals in some places, as you can see the next point, wherein you want to emphasize on something, that I achieved 100% target, okay, or got 90% score. So you want to put that in capitals ताकि सामने वाला उसे बराबर पढ़ सके. Paragraphs are also very important क्योंकि आप बुलेट फॉर्म में डाल रहे हो तो it should be easy to read. So remember one thing, आप आपके लिए नहीं बना रहे हो बायोडाटा, दूसरे के लिए बना रहे हो, तो उनको कैसे लगेगा, उनकी थिंकिंग क्या है, उस हिसाब से आपको बायोडाटा बनाना है. सो पैराग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एक अगर समझो आप एनएसएस का एक्सपीरियंस लिख रहे हो या एसवाई बीकॉम का एक्सपीरियंस लिख रहे हो, फिर टीवाई बीकॉम शुड बी अनदर पैराग्राफ, थोड़ा गैप छोड़ के, एक दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए. सो देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन व्हाट यू मेंटेन. ओके, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन दैट the word bhavans is underlined in red. Okay, it's underlined in red because Microsoft Word says there's a spelling mistake. हालांकि there is no spelling mistake, but it's an Indian word. You have to make sure कि आपके बायोडाटा में कोई underlined green या red lines नहीं है. You have to rectify all those mistakes. Grammatical mistakes होगा, spelling mistake होगा, extra space होगा, because it's very very irritating. वो बंदा पढ़ेगा ही नहीं. वो बायोडाटा में इतने सारे रेड एंड ग्रीन लाइन देखेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, एंड यू विल लूज आवर अपॉर्चुनिटी. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट. ओके, अ सिंपल थिंग लाइक सी आई मेंशनड हियर, व्हाई आई गोज देयर. दिस इज अ वेरी सिंपल ग्रामेटिकल मिस्टेक. इफ यू हैव नॉट स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम एंड यू हैव स्टडीड इन सम अदर मीडियम, उर्दू और मराठी और गुजराती मीडियम, तो जिसको इंग्लिश आती है उसे प्लीज बायोडाटा बताइए, बिकॉज ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना बायोडाटा में, वो आपका बहुत बुरा इंप्रेशन देती है. So you need to be a little careful of how you word the biodata. At the beginning of the CV, see biodata, resume and CV are all the same thing with slight difference.
So I will use these words interchangeably. Okay. अच्छा, ये जो आपकी CV है, पहले right in the beginning you must write down your achievements and your skill sets. क्यों? क्योंकि at a glance जो पढ़ने वाला है उसे पता चलेगा कि you are an achiever. कुछ तो किया है कॉलेज में, कुछ तो किया है लाइफ में. That can be in the form of marks. आप अपना मार्क्स लिख सकते हो, 87% आया, 82% आया. आप ये भी लिख सकते हो कि आप NSS में पार्टिसिपेट किया, या आप ये कमेटी में थे कॉलेज में, या वो कमेटी में थे, डिबेट में पार्ट लिया, एलिक्यूशन में पार्ट लिया, डांस ड्रामा वगैरह में. सो योर अचीवमेंट्स इन अ नटशेल शुड बी देयर ऑन द टॉप. ओके, along with your skill sets. Skill sets are also very important, provided they are true. अभी सभी लोग लिखते हैं, I'm very hard working, I don't mind working till 12 o'clock in the night, वगैरह वगैरह. Okay, so if you see what I've written on the slide, I've said whatever you write, you're sincere, you're hardworking, you're dedicated, जो भी है, you have to prove it. क्योंकि अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं पूछूंगा, ओ यू हार्ड वर्किंग, गिव मी एन एग्जांपल. मुझे प्रूव करो कि यू आर हार्ड वर्किंग. तो बायोडाटा में वो ही लिखो जो आप प्रूव कर सकते हैं, जो आपने किया. और आप एक्चुअली अगर देखोगे ना, तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, लेकिन ये दीज आर नॉट फॉर्मल एंड नॉट स्ट्रक्चर्ड. ओके, आपने घर में भी शायद आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले, आपके बिल्डिंग में आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा, कोई ईद पार्टी या कोई होली पार्टी या कुछ भी किया होगा, डीजे को ऑर्गेनाइज किया होगा. दैट्स ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, राइट? So this is all useful in a job. So you must mention all that. So जो भी आपको भी insignificant लगे ना, job environment में, job situation में, ये काफी important है. So I think ये सब चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए. But जो भी आप लिखेंगे, आपको prove करना चाहिए. Okay, the next point is quantify. आप जो भी बोलते हैं ना, हवा में बात नहीं करने, क्वांटिफाई करने का कि ये दिस इज माय परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आई डिड वेरी वेल. वेरी वेल का कोई मतलब नहीं है. आई गॉट 72% मार्क्स. Okay, that is a quantifiable marks that I got. Yeah, how many times I took part? I was 3 years in the college and I took part in elocution every time. 3 years I took part. Okay, so quantifiable. I came second in class, or I came second in the debate. Everything has to be quantifiable, because quantifiable actually translates into a benefit for the reader, right? So please keep that in mind, that the reader जो भी पढ़ रहा है आपका बायोडाटा, he should not get the impression कि ऐसे हवा में बोल रही है. आई डिड वेरी वेल, मैं यस आई कैन डू इट. आई कैन डू इट मतलब क्या किया है क्या पहले? तो थोड़ा एग्जांपल दो, क्वांटिफाई करो उसको. ओके, सो दिस इज अ वेरी रियल लाइफ काइंड ऑफ सिचुएशन. आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स प्राइमरीली बिकॉज बायोडेटा और सीवी या इंटरव्यू जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना आपको परेशान करेगा. सो ट्राई एंड मेक इट सिंपल. एटलीस्ट आपका बायोडेटा इतना सिंपल होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन तो कर सको ईच एंड एवरी फुल स्टॉप एंड कॉमा ऑफ द बायोडेटा. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया, बाजू वाला ने कि आप अपना एग्जांपल मत दो, क्योंकि दैट इज नॉट राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए. एंड सेकेंडली, आप फंस जाओगे. व्हाई यू वांट टू मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ? 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पता चलेगा कि आपने नहीं किया ये. सो एंड एनीवे, डोंट स्टार्ट योर करियर बाय टेलिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट करेक्ट. इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, राइट? और आजकल तो आप ईमानदारी से काम करोगे तो बहुत ज्यादा स्कोप है लाइफ में. तो पहले जैसा नहीं है कि गलत बोल के या गलत काम करके करना आगे बढ़ सकते हैं. सो प्लीज डोंट टेल एनीथिंग बट द ट्रूथ. गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स. ओके, रिमेंबर वन थिंग, कि आपके जो एकेडमिक्स है, जो मार्क्स है, वो प्री डिसाइडेड है. जितना आपने पढ़ाई किया उतने आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. But your biodata is going to make a difference, right? Your curriculum vitae, your CV is going to make a difference. If you have achievements, अगर आपने एलिक्यूशन कंपटीशन में पार्ट लिया, उसका वीडियो है, उसका लिंक डालो बायोडाटा में. डांस कंपटीशन है या एनएसएस फील्ड ट्रिप के कोई फोटोग्राफ्स है, आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी अपलोड किए, इंस्टा पे, तो वो उसका लिंक डालो. Put all those links in the biodata. It will show that you're a versatile person, you're an all-round person. Remember, the biodata is about you, right? And you as suitable for the job. So you need to take care of all these things and plan it in a way in which जो पढ़ने वाला है उसे लगेगा कि नहीं, इसको इंटरव्यू करना चाहिए. ओके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बायोडाटा. जो पढ़ेगा उसे बोलना चाहिए कि हाँ, ये मीति सिंह को बुलाओ, ओके, या XYZ को बुलाओ. Okay, that should be the idea of your curriculum vitae or your biodata. Okay, so that brings us to the end of the first session, which is your CV writing skills. Now I will share another slide of mine.
which is, I'm going to show you Shefali Matre's biodata. Okay. Now, Shefali Matre, I hope everybody can see it. Okay, just I want you to see the format. Content देखने की इतनी जरूरत नहीं है. Format is important. Okay, Shefali Matre ने, she has written general manager marketing straight away. Okay, so very clear कि उसकी क्या capability है, उसकी क्या salary हो सकती है और वो कौन से position के लिए apply कर रही है. वो मुंबई की है, उसके phone number, email ID और उसका LinkedIn भी दिया हुआ है. Right, like I told you, give your links. Facebook का link अगर आपने Facebook के ऊपर सारे अच्छे ठीक फोटोग्राफ्स डाले हैं तो, या इंस्टा पे या कहीं और पे भी, wherever you are. Then she is very briefly writing in bold, which she has handled 9 countries, 5 sectors, 22 brands, blah blah blah. और नीचे लिख रही है a result driven marketer focus on business objectives, blah blah blah. So in a nutshell, आपको एक सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि ये शेफाली मात्रे क्या है. फिर उसके अचीवमेंट्स लिखा है, highest sales, incremental revenue, launched 2 e-commerce platforms. So in 3-4 lines, she's writing what her achievements are. Skill sets, उसके नीचे उसने लिखा है कि वो strategy और budgeting में अच्छी है, project management, communication, digital advertising, blah blah blah. Okay, and then she quickly moves on to the work experience. See how clearly she has written it. General manager marketing into bracket company का नाम और June 19 to Feb. तो फ्रॉम व्हाट डे टू व्हाट डे आपको एक ही ग्लांस में पता चल जाएगा कि ये शेफाली मात्रे ने कौन सी कंपनी में काम किया है, क्या पोजीशन थी और कब से. राइट, पीपल डोंट लाइक जॉब हॉपर्स, सो कब से कब काम किया हुआ है. देन शी इज मेंशनिंग ऑल दीज पॉइंट्स हियर व्हिच आर दी व्हाट शी एक्चुअली डिड इन द जॉब. फिर आगे जाके कॉन्सेप्ट हेड मार्केटिंग थी कोई कंपनी में चेन्नई में. राइट, पहले उसका जॉब मुंबई में था, उसके पहले चेन्नई में, ये डेट से ये डेट, अगेन सेम फॉर्मेट चीज फॉलो है. उसके पहले वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी कोई दिल्ली वाली कंपनी में, अक्टूबर 10 से ये डेट तक. उसने लिखा है कौन से ब्रांड हैंडल किए वगैरह वगैरह. उसके पहले और कोई कंपनी थी मुंबई में और उसमें और कुछ लिखा हुआ है. सो सिमिलरली शी इज मेंशनिंग ऑल हर कंपनीज एंड ऑल हर वर्क एक्सपीरियंसेस. ओके, उसका एजुकेशन है यहाँ पे, शी डन एमबीए फ्रॉम वेलिंगकर, शी डन बीएमएस फ्रॉम सेंट एंड्रूज वगैरह वगैरह. और उसके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग वाली है तो सब सर्टिफिकेशन वही लाइन में है. सो बेसिकली एज यू कैन सी, शेफाली मात्रे हैज जस्ट मेड अ 2-page CV. Okay, but in that 2-page CV she has explained everything that she has done in her education, in her work space, and a little bit about her personal life. Okay, so that is as far as the CV writing is concerned. I hope everybody is clear. I hope you people have understood, or if you have not understood properly, you have made points, because we'll have a question answer session at the end of this. आप जो भी चाहे आप मुझे पूछ सकते हो, बेसिक सिंपल एलिमेंट्री चीज होगी तो भी चलेगा. Okay, I would like to move to the next part of my presentation, where I will tell you about the interview. So there is something called, 1 minute, I will not share my screen right now. Okay, let me tell you, there is something called as an interview personality. Okay, कोई बच्चे बहुत शांत दिखते हैं रियल लाइफ में, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं, सिंघम बन जाते हैं. ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इंटरव्यू पर्सनालिटी. आई डोंट वांट यू टू बी जेम्स बॉन्ड और सिंघम, आई डोंट वांट यू टू शूट द इंटरव्यूअर, बट यू हैव टू हैव सम पर्सनालिटी व्हिच विल इंप्रेस द अदर पर्सन. राइट, वो आपको जॉब के लिए मिल रहे हैं. राइट, तो वो जॉब के लिए आप सुटेबल हो के नहीं, वो तो पर्सनालिटी होनी चाहिए. राइट, so we are calling this session the interview personality. और ये इंटरव्यू पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनेगी, लेकिन अगर जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप थोड़ा लिखेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो उससे शायद फर्क पड़ेगा. इंटरव्यू इज डिवाइडेड इनटू प्री इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के पहले का जो प्लानिंग होता है, द इंटरव्यू इटसेल्फ, और फिर पोस्ट इंटरव्यू जो अपन एनालिसिस वगैरह करते हैं. सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन to tell you about the pre-interview stage. I hope everybody can see this slide. Okay, so you have to prepare the subject. Okay, in the pre-interview, that means when you're sitting at home, okay, and you got a call for the interview. Okay, you know कि 2 तारीख को ये interview है.
आपकी सब्जेक्ट क्या है, आपने अकाउंट्स जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द जॉब, फॉर द सब्जेक्ट विच इज फॉर एन अकाउंट्स असिस्टेंट फॉर इंस्टेंस। ओके, तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंपनी विल स्पेसिफाई कि हमको ये चाहिए, राइट, हमको टैली का एक्सपीरियंस चाहिए या बैलेंस शीट का एक्सपीरियंस चाहिए या फाइनलाइजेशन, जो भी वो बोले, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट सब्जेक्ट। You have to study the company. You must not appear ignorant. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसे को पता ही नहीं है, ऐसे ही चली आई इंटरव्यू के लिए, उसने कोई रिसर्च भी नहीं किया, कुछ मेहनत भी नहीं की स्टडी करने के लिए कि हमारी कंपनी क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कहाँ कहाँ लोकेशन है। सो यू मस्ट स्टडी दी कंपनी। ओके, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इट ऑल्सो शोज योर इंटरेस्ट, राइट, व्हेन यू से कि हाँ मुझे पता है कि आपका टर्नओवर इतना है। अकाउंट्स पर्सन हैज टू नो फिगर्स, राइट, हैज टू नो टर्नओवर। So you need to study the company. Go through your academics. See, you are a fresher, okay? आपके पास एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं जिसके ऊपर लोग क्वेश्चन करेंगे आपको, तो मैं क्या पूछूंगा आपको एकेडमिक्स के बारे में पूछूंगा, आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे। मैंने ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू किया है कि जिसको पता भी नहीं कि उसके सब्जेक्ट्स क्या थे। आपने एस वाई में कौन से सब्जेक्ट लिए, टी वाई में कौन से सब्जेक्ट लिए, वाई, बिकॉज स्विच ऑन स्विच ऑफ। अभी एग्जाम खत्म ना, अभी खत्म, चैप्टर क्लोज, बुक्स क्लोज, ये नहीं चलेगा, बिकॉज इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज गो थ्रू योर एकेडमिक्स। आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे, वो सब्जेक्ट्स में आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या समझ पाए, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं बताने के लिए एक्सेप्ट योर एकेडमिक स्किल्स। आपके मार्क्स जो भी होवे, लेकिन अभी इंटरव्यू के ऊपर जजमेंट होने वाला है। सो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उसी के ऊपर जज करेंगे, तो बेटर पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बेटर डू द बेस्ट। तो आपके जो भी एकेडमिक्स है एस वाई टी वाई का खास करके, प्लीज गो थ्रू दैट। ऑल्सो प्लीज गो थ्रू योर सीवी। आपका जो बायोडेटा है, यू मस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि वो बायोडेटा से ही क्वेश्चन आएंगे। आई गिव एन एग्जांपल। किसी ने लिखा था बायोडेटा में, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने पूछा, ओ क्रिकेट, वेरी नाइस, आप कहाँ खेलते हो? तो बंदा बोला, नहीं वो मैं खेलता था पहले, तभी मैं छोटा बच्चा था, सेकेंड स्टैंडर्ड में। ओके, तो आज नॉट रेलिवेंट, इट्स नॉट अ रेलिवेंट हॉबी, राइट, जो 10 साल पहले वाली बात है, इट्स नॉट रेलिवेंट नाउ। सेकेंडली, एक और बंदे ने बोला कि मैं खेलता नहीं हूं, मैं सिर्फ देखता हूँ। यार क्रिकेट तो सारी हिंदुस्तान देखती है। इट्स नॉट अ हॉबी दैट यू कैन राइट क्रिकेट। ओनली इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट यू शुड बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट इट, राइट। आप कहाँ खेलते हो, कौन से ग्रुप में हो, कौन से जिमखाना में हो, कौन तुम्हारे फ्रेंड्स हो, भले मोहल्ला में भी खेलते हो, गली क्रिकेट, मैं मेरे बायोडेटा में लिखूंगा तो गली क्रिकेट लिखूंगा। तो जो भी है, यू हैव टू प्रूव इट। सो प्लीज गो थ्रू योर बायोडेटा बिफोर द इंटरव्यू, क्योंकि आपने अगर कुछ लिखा है उसमें जो सही नहीं है, तो आइदर यू रिमूव इट or you be ready with an answer. Okay, so this is the pre-interview stage where you're preparing yourself before you walk into the person's cabin. Okay, then there is something called during the interview. Now I think everybody will be fascinated by these pictures. I was also fascinated. You need to dress formally. I'm not saying you have to look like Katrina, okay, but you have to dress formally. आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ये कोई मजाक नहीं है, ये जानू भेंडे है राइट साइड पे, यू कांट ड्रेस लाइक हिम। ओके, मतलब शर्ट बटन ओपन। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे इंटरव्यू देखे हैं जहां बंदा, ये ऐसा तो नहीं कोई आता है पागल, बट फर्स्ट शर्ट बटन खुला, ये शर्ट का जो पहला बटन है वो खुला। यार ये बॉडी बिल्डिंग का इंटरव्यू नहीं है, या नीरज चोपड़ा के कंपटीशन का इंटरव्यू नहीं है ये। दिस इज एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब. So you cannot have your first shirt button open. Okay, I'm talking about the boys. The girls obviously will not have it open. But you cannot be chewing pan. Okay, बंदा पान खा रहा है इंटरव्यू के टाइम पे, या वो टबैको या जो भी है, you can't be doing this. You know, your shirt cannot be all ruffled. It has to be all, you know, well ironed and neat and clean. अगर बारिश का टाइम है तो छाता होना चाहिए, और अगर आप भीग गए तो थोड़ा पहले पहुंचो, राइट। See, I've written at the bottom of the screen, reach 15 minutes in advance. पहले जाओ, आराम से बैठो, कूल डाउन, काम डाउन, गेट योर ब्रेथ बैक। ओके, राइट साइड पे मैंने लिखा है फोटो के नीचे, यूज द वॉशरूम। आराम से जाओ वहां, वॉश योर सेल्फ, क्लीन योर सेल्फ अप। यू विल ऑल्सो गेट टू सी द ऑफिस। आप जाएंगे अंदर, वॉशरूम अंदर ही होगा,
तब जाएंगे आपको देखने मिलेगा कैसा एनवायरमेंट है, कैसे लोग हैं. You will get comfortable. When you walk into the interviewer's cabin, you will already be comfortable. You will not feel strange. You will not feel out of place. ये comfort level बहुत जरूरी है, right? तो ही confidence आएगा. So interview में dress sense is very very important, क्योंकि आप दरवाजे के अंदर जाओगे तो first impression is going to be based on the dress. Okay, so please keep this in mind. Go a little early, dress well. I'm not saying dress for a party. You're not going for a party. पार्टी के कपड़े पहन के जाने की जरूरत नहीं है. ओके, या आज होली है और होली के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है. बट इट्स अ फॉर्मल इंटरव्यू, आप थोड़ा फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ. Okay, so please keep that in mind. Okay, now I'm assuming that everybody knows that this is a photograph of Ranbir Kapoor. Okay, जब भी आप दरवाजा के अंदर जाते हो ना, they are not expecting Ranbir Kapoor, they are expecting you. Be yourself. वो आपको ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शिफाली मात्रे या जिग्नेश शाह या मेहरुनिसा खान या जो भी आपका नाम है, they are expecting you. So be yourself. Don't act like Ranbir Kapoor and certainly not like Ranveer Singh. So आप carry off नहीं कर पाओगे. Okay. So this is interview is about you. So be yourself. Okay. आप में कुछ खामियां हैं, आप में कुछ strengths है, जो भी है आप हैं. Right. Most of us forget that and we try and be somebody else. Right. If you try and be Shashi Tharoor, तो problem ही होने वाला है. Right. क्योंकि साथ में डिक्शनरी रखनी पड़ेगी फिर और सामने वाले को भी देनी पड़ेगी. So don't do all that. वो सब मत करो. Simply be yourself. It is very difficult to be yourself, but I'm telling you this again and again because that is what is important. They want to hire you. They don't want to hire what you can be or who you can imitate. That's not important. They have seen your biodata and they decided to hire you. So now that you are you, okay, and you entered the room, you need to be confident. Okay, by confident I mean that you need to be sure of yourself, you need to be comfortable in your skin, you need to be breathing normally. आप ऐसे पैंटिंग नहीं होने चाहिए या आप ऐसे नर्वस या ऐसा आप नहीं करते होंगे, राइट? वो नहीं चलेगा. यू हैव टू बी काम, रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट. यू शुड नॉट बी नर्वस, क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए तो आप भूल जाओगे. आई एम गारंटिंग यू कि यू विल फॉरगेट अ फ्यू थिंग्स और फिर गड़बड़ होने वाली ही है इंटरव्यू में. ओके, सो बी योरसेल्फ. ओके, बी ईगर. आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बी ईगर मतलब आपके आईज, आपके ईयर्स हैव टू बी यू नो लाइक विलिंग टू ऑब्जर्व, विलिंग टू लिसन, रेडी टू टेक. राइट, अभी राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ये जूम मीटिंग में मुझे पता नहीं क्या हो रहा है या क्योंकि सबके कैमरास ऑफ है. राइट, so but you can see me whether I'm eager, what is my body language, how I'm talking. So you need to be very attentive when the person is speaking. You need to be expressive when you are speaking. Use your hands, be free to talk freely, to think and talk, gesticulate. वो सब करना चाहिए. So they have to feel that you are an eager person. ऐसा नहीं कि ऐसा बैठा हुआ है just like in the photograph. बॉडी लैंग्वेज देखो बंदे की, ऐसे स्लाउच करके बैठा हुआ है, सोफे पे बैठा है, ऐसा है, ये नहीं चलेगा. You have to be alert, you have to be upright. Your body language again is a very powerful communicator. It very much talks about you and tells the listener who you are and what you are. So be careful about your body language. Okay. The next picture that you can see on the left side, you don't pakao. Sometimes what happens is सामने वाला पकाता है, okay, but generally हम लोग भी पकाते हैं. I'll tell you why that happens. Because we have some knowledge. Okay, अपने पास कुछ ज्ञान है, कुछ एक्सपीरियंस है, वो हम बताना चाहते हैं, वो हम बोलना चाहते हैं. शायद कभी कभी हम शो ऑफ भी करना चाहते हैं, और क्यों नहीं, अगर अचीवमेंट है तो आप बात करना चाहेंगे. आप बात जरूर करो, लेकिन उसका दिमाग मत खाओ, बिकॉज ही विल गेट इरिटेटेड. सामने वाला अगर इरिटेट हो गया तो उसका कमेंट आएगा टॉक्स टू मच. सो यू हैव टू बी रेलेवेंट, टू द पॉइंट बोलना चाहिए. अगर उसने इंटरेस्ट बताया तो यू कंटिन्यू फर्दर. राइट, उसके भी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा, उसके भी जेस्चर से पता चलेगा कि इज द इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड और नॉट. So body language is a very very important tool in an interview. हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रोफेसर के साथ कि जूम पे ये सब मजा नहीं आ रहा है. राइट, 1.5-2 साल हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं,
कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेशन इज ओनली हाफ, क्योंकि ये कंप्यूटर बीच में आ गया, राइट। लेकिन इंटरव्यू, जब फिजिकल इंटरव्यू होगा, तभी आपको ये सब चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप कितना बोल रहे हो, कम बोलो, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाओ, इंटरप्ट। ओके, एज यू कैन सी, मिसेस शर्मा इज शाउटिंग एंड शी इज इंटरप्टिंग। वो कभी मत करना, बिकॉज इट इज रूड, इट इज इंसल्टिंग, ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये आप कभी नहीं कर सकते। यू शुड नॉट बी इंटरप्टिंग एट ऑल। इफ दे इंटरप्ट यू, इट्स ओके, आप चुप हो जाओ, but don't interrupt them at all. And as you can see on the top, you need to keep smiling. Everybody likes a smiling face. अगर कोई आपको सुबह भी आपका नेबर मिलता है स्माइलिंग फेस, आपको मजा आता है, आप गुड मॉर्निंग भी कहेंगे एक बार। लेकिन ऐसा फ्राउनिंग फेस वाला या ग्रम्पी फेस वाला कोई मिलेगा आपको, so you will cross the road and go away, right? So be smiling. Everybody likes a pleasant person, a smiling person. Okay, so at the end of the interview, so now most of the questions are over. At the end of the interview, you should ask questions. आप जरूर पूछिए क्वेश्चंस टेक्निकल। सर ये अकाउंट्स में कहाँ तक मुझे करना पड़ेगा, समझ से फाइनलाइजेशन तक, तो फाइनलाइजेशन का इनकम टैक्स मुझे करना पड़ेगा, या मेरे कोई सीनियर होगा मुझे सिखाने वाला। आस्क क्वेश्चंस, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि ये जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, राइट, टू नो कि भाई ये जॉब में क्या क्या है। अगर वो बोलेंगे आपको बैलेंस शीट साइन करना है, एज अ फ्रेशर यू कांट साइन द बैलेंस शीट, राइट। सो आप टेक्निकल क्वेश्चन उनको पूछो, ओके, टेक्निकल का वो ऑफिस का टाइमिंग वगैरह मत पूछो, ओके, डोंट आस्क अबाउट ऑफिस टाइमिंग्स, डोंट आस्क अबाउट सैलरी। अगर वो बताना चाहेंगे वो बताएंगे, अगर नहीं बताया तो जाने दो, ओके। आप सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भाग रहे हो, सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ सैलरी नहीं है, आपको करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, काफी चीजें चाहिए, राइट। सो आस्क देम टेक्निकल क्वेश्चंस, ask them technical questions about the interview, okay, and you can also feel free to ask कि how did it go, आपको मेरा इंटरव्यू कैसा लगा, okay, there's no harm in asking कि मेरा कैंडिडेचर कैसा है, and in the end, just before you get up, you can say when can I give you a call to get the result of this. इसका मतलब ये भी है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप इनिशिएटिव ले रहे हो, right? So these things also matter when you're taking or you're giving an interview. Okay, then we come to the post interview. You need to analyze कि इंटरव्यू में आप खुद एनालाइज करो कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या मैंने जवाब बराबर दिया कि नहीं। यू नो, ट्राई एंड एनालाइज योर प्लसेज, योर माइनसेज, योर पिटफॉल्स। ये जो एक्सपीरियंस है, अब अगर आप एनालिसिस करोगे तो योर नेक्स्ट इंटरव्यू विल बी दैट मच बेटर, ओके। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट थिंग टू बी डन इज एट आफ्टर द इंटरव्यू इज ओवर, लेटर ऑन इन द इवनिंग और द नेक्स्ट डे, सेंड अ थैंक यू नोट। अगर उसका फोन नंबर है आपके पास तो व्हाट्सएप मैसेज भी भेजोगे तो इट्स ऑल राइट। सेंड अ वेरी स्वीट polite thank you note, okay. remember that this remember that this interview is about you, okay. You can see my picture on the screen. It's not about me, okay, it's not about me at all. It's about you, and you are really on your own. आप अपने खुद के बल पे आपको ये इंटरव्यू देना है। आपने अच्छा सीवी बनाया, आप कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेके आए, आपने अच्छी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, और अभी आप इंटरव्यू रूम के अंदर हो। यू आर ऑन योर ओन। आपको खुद अपने बल पे जो भी करना है वो करना है। ये मेरे लिए या प्रिंसिपल साहब के लिए या रीना मैम के लिए नहीं है। यू आर ऑन योर ओन, सो कीप दैट इन माइंड कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेस्टिनी। थैंक यू। Wow, sir, such a wonderful session. Thank you very much, sir, for this really, very effective and excellent session. Some extremely important tips that are required when you appear for interview or when you write the CV have been focused in this session. Sir, I'm very sure students must have gained a lot through this. And now it's time for students to ask you some questions to clarify their doubts, sir. Sure. So students, can we have you can raise your virtual hands and ask the questions. Please feel free to ask questions to sir. As I said in the beginning itself, sir is one amongst us. He has been a student of our college, so please feel free to talk to sir. Ask your questions. It's an excellent opportunity to know many things. Make use of this opportunity, students.
Raise your hand so we can allow you to unmute and you can answer. Prachi Jaiswal seems to. A student can unmute and ask. Prachi, you can unmute and ask, please. Yes, sir. Thank you, ma'am. सर आई वांट टू आस्क दैट व्हेन जब भी हम लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो एक थोड़ा सा फियर रहता है हमारे अंदर कि जाएंगे अंदर क्या होगा क्या पूछेंगे और उतने में ये ना कभी कोई कोई बहुत ज्यादा जो मतलब कुछ किया रहता है उसने बहुत कुछ अचीव किया रहता है बट उस मोमेंट पे ना वो फेल हो जाता है और वो ऐसा कुछ कर देता है जो इंटरव्यू को अच्छा नहीं लगता है तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए मतलब वो फियर स्टार्टिंग का फियर हम लोग कंट्रोल कैसे कर ले कि और भी नॉर्मल रह सके उस टाइम पर यस गुड क्वेश्चन बाजी। तो ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम एंड कूल रहना चाहिए, आपको रिलैक्स रहना चाहिए। ओके जब भी आप रिलैक्स रहेंगे तभी जो भी आपने किया है आपको सब याद रहेगा। आप टेंशन में रहेंगे, आप नर्वस रहेंगे तो नहीं याद रहेगा। तो आप रिलैक्स कैसे रहेंगे? ओके आपको जल्दी पहुंचना चाहिए। सो देयर इज नो घाई घाई, देयर इज नो रश रश। मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं मेरे बाल बराबर है कि नहीं, मेरे बायोडाटा में सब मार्किंग बराबर है कि नहीं, ये सब वहां जाके नहीं देखना है, ये पहले से ही प्लान करके रखना है। सो व्हेन यू गो इन एडवांस, आप वहां पे जाके वॉशरूम में जाएंगे, पानी पिएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और बैठेंगे। एंड डोंट थिंक अबाउट द इंटरव्यू, डोंट थिंक अबाउट द इंटरव्यू, क्योंकि अगर हमारे इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं तो मतलब आपका इंटरव्यू के पहले इंटरव्यू हो जाएगा, आप सारे आंसर्स पहले ही हो जाएगा। यू हैव ऑलरेडी रिहर्स, यू ऑलरेडी प्रैक्टिस एट होम। आप बस में भी आ रहे थे तभी आपने प्रैक्टिस किया, तो वो सब हो गया। अब वहां पे बैठे शांति से आजू बाजू देखो, ऑफिस कैसी है, क्या है, so that your mind automatically moves away from the tension of the interview. Okay, you have to de-stress. Actually, the other thing, very important thing, Prachi, is के आप एक्चुअली क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, तो फेल हो जाओगे और आपको जॉब नहीं मिला तो क्या होने वाला है? हाँ प्राची, ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है आपको, कुछ नहीं होने वाला है। ओके एट द मोस्ट आप डिजेक्टेड फील करोगे 15 मिनट के लिए, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, बट देन यू विल ऑल्सो लर्न टू डू बेटर। सो हम लोग डरते हैं ऑल द टाइम कि हाय हाय मेरी बस मिस हो जाएगी, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वी आर ऑलवेज लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर। तो वी हैव टू ट्राई एंड ओवरकम दैट फियर बाय रिलैक्सिंग एंड बाय सेइंग क्या फर्क पड़ने वाला है, एक जॉब नहीं मिला तो और 2 जॉब हैं, और 3 इंटरव्यू हैं मेरे लिए, और जेन्युइनली है। इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट और आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लोगे तो अच्छे लोगों की कमी है ये दुनिया में, लेट मी टेल यू दैट। आपके प्रोफेसर्स भी आपको यही बताएंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमूव द फियर बाय बिल्डिंग अप अदर थिंग्स अराउंड इट, सो दैट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आपका डर नहीं रहे। Thank you, sir, for the explanation. Rupen sir, Kavita Nag has raised her hand. Kavita, can you please unmute and ask? Kavita, I can't see you. Yes, sir. Good evening. Yeah. Sir, I want to add that the 3-4 resumes I have seen means till now. So in that I have seen that the first step they write that is objective. So what should be written in that? And after means all, if our interview and everything is means all well, means no problem. But after that we listen that we don't want freshers. Why is that? Okay, both very relevant questions, Kavita. पहली बात ये तो इट्स नॉट रिज्यूम, इट इज रेज्यूमे. ओके इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रेज्यूमे. लेकिन आप बायोडेटा बोलोगे या आप सीवी, करिकुलम वीटे का प्रोनाउंसिएशन तो आधे लोगों को आता नहीं है, तो सीवी बोलते हैं, ठीक है चलेगा. ओके ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. समझो आप TY BA की स्टूडेंट हो, ओके और आप ह्यूमैनिटीज में हो एंड you want to take up a job as a psychologist. तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम अ renowned psychologist in my profession, doing industrial psychology, blah blah blah. 2 lines. Okay, if you're an account student, your objective is to become a master in accounting and climb to the top of my profession as soon as possible. So what is your objective of giving this biodata and your objective in life?
उसका मतलब है ऑब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से फ्रेशर्स को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, बिकॉज ऑब्जेक्टिव विल कीप चेंजिंग। काफी लोग लिखते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप टीवाई में हो या एसवाई में हो, आपका ऑब्जेक्टिव एक है लाइफ में, 1 साल के बाद चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है। बट अचीवमेंट्स एंड स्किल्स अगर आप लिखोगे ना, then that's as good. Then on the spot it will tell people that you are what you are, right? एक पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में लोगों को पता चल जाएगा what you are. So that is the object of objective. Okay. Second, आप बोल रहे हो कि at the end of the interview they say कि freshers की जरूरत नहीं है, right? See, let me tell you, this is an excuse. कविता, ये आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए ये एक बहाना है, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि आप फ्रेशर है, राइट? आपको पहले से ही पता है। या समझो आपका एक्सपेक्टेशन है 15,000 सैलरी का और उनका बजट है 10,000, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। हाउ डू दे से नो टू यू? दे से वी डोंट वांट फ्रेशर्स। सो इट इज एन एक्सक्यूज, ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। दे आर जस्ट रिजेक्टिंग यू फॉर सम अदर रीजन, बट यू कैनॉट टेल यू दैट रीजन। मे बी यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड, आपने बराबर जवाब नहीं दिया, या आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, या और कोई रीजन हो सकता है। जो भी रीजन है वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, शायद आपको हर्ट नहीं करना चाहते, राइट? अगर आपको बताएंगे कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर पुअर, तो आप हर्ट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। तो शायद आपको नहीं हर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको नहीं बताया और बोल दिया कि फ्रेशर्स, बट ये रीजन नहीं है, ये एक्सक्यूज है। ओके, राइट? Thank you. Yeah. Yes, students. Anyone else? Any questions? Please feel free. स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, रैंडम, खास करके जिसका वीडियो ऑफ है। हाँ, अनिकेत गोहे, अदिति पलावे, Sir, yes, who wants to ask? sir, I have one doubt. Sir, when I was in first year, Chaitanya, I can't see you. sir, I can't open my camera because Okay, fine, go Yes. ahead. So, ma'am, so sir, when I was in first year, I went for a Starbucks interview as a product manager. So, I'm not with a clean shave and I was fat at that time. So many times जब इंटरव्यू होता है तब थोड़ा डर लगता है कि बड़ी इनसिक्योरिटी आती है एंड बहुत एंजाइटी आती है मैंने ड्यू टू बॉडी. या सर, आई वर्क ऑन माय फिटनेस, लाइक नाउ इट्स मीडियम, बट बहुत बार मुझे होता है वैसे. So actually, Ankit, you know, unfortunately, this is the reality of life, कि हम लोग लुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते हैं. ओके, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बंदा या बंदी कितना काम करेगी, कितनी इंटेलिजेंट है. हम लोग लुक्स के ऊपर, और इंटरव्यू में और कोई तरीका भी नहीं है, कितना स्मार्ट बोल लेता है. आप काम तो नहीं कर रहे हैं ना स्टारबक्स में, आप 1 महीना काम करोगे फिर वो डिसाइड करेंगे कि whether they are good or not. There is no other way of them deciding. So unfortunately, we have to depend on looks and communication skills. So इसमें एक्चुअली कोई इलाज नहीं है इसका. आप सामने वाले की दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते. But what you can do is not be ashamed of being fat or overweight. You don't have to be ashamed of being fat or overweight. Okay, round is also a shape. Remember that. You are in shape, Ankit, because round is also a shape. Okay, so don't be ashamed. जो भी है, जैसा भी है, मैं ऐसा हूं. एक गाना भी था ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, right? So that itself will give you confidence. भाई अच्छा ठीक है, आई एम नॉट द बेस्ट फॉर द जॉब. सब बॉडी बिल्डर फिट लोग जा रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन जो भी है अभी मैं आ गया हूं ना. सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि अभी आ गया हूं तो गिव इट माय बेस्ट शॉट ना. अगर मैदान में उतरे हो तो खेलना तो पड़ेगा ही ना. सो डोंट फील डिफिडेंट, डोंट बी लेस कॉन्फिडेंट अबाउट योर लुक्स. अच्छा, शेव तो तुम्हारे हाथ में है बॉस. इफ यू डोंट शेव एंड गो तो प्रॉब्लम है. तो मैं भी भगा दूंगा तुमको इंटरव्यू से.
ये तो चलेगा ही नहीं. How can you go without shaving? Unless you're Virat Kohli, which you're not, right? So ये confidence की बात है अंकित, और ये अंदर की बात है. Little confidence will come by doing the right things, and little confidence will come by realizing that I have to give it my best shot now. And it's all about, life is all about confidence. Okay, I'm not saying don't have substance. Substance भी होना चाहिए, वरना job नहीं मिलेगा. But you're saying Starbucks में job नहीं मिला क्योंकि looks की वजह से. अभी Starbucks is a front end role. You know, you have to meet people, you have to do this, you have to do that. तो शायद उनको ये बहुत बहुत important point लगा होगा. Okay, and thanks for switching on the camera. You're not so fat here. Yes, sir, clear. Yeah. So I think your session was pretty clear with all the examples and basic level explanation that students don't have many doubts. I hope so. Yeah. Unnati Doshi has raised a hand. Can we take the question? Sure. So interviewers often ask that what are your weaknesses? So how should we answer that question? So, you know, most of the time what happens is that people answer this question by giving their strengths. So if I'm asked what are your weaknesses, I say, you know, my problem is that I work very hard. You know, you're actually giving your strength as a weakness, which is foolish. Don't do that. Interviewers smarter than you. They want your genuine weakness. So maybe my follow-up is not very good. Maybe I'm not very consistent. Okay, but I'm working on it. You know, maybe my English language skills are not so good. So say something which is your genuine weakness. Okay, don't say I'm on drugs or something like that, no? Because that anyway you will not be eligible for the job. Okay, but people make this mistake by giving their strength as a weakness. It's a way of showing off. Don't do that. Be honest, be genuine. Or like, for instance, you can say something as simple as, I can't work late hours. Okay, because I have responsibilities at home, so I have to reach home every day by 8 o'clock. If there's night shift or, you know, late sitting, I'll not be able to do it. Be honest. I cannot travel. My parents will not let me go out of Bombay. For instance, I don't know. I'm just giving an example. Right? So do whatever are your genuine weaknesses. You can say so, okay, but just say them very lightly. Okay, don't emphasize too much on your weaknesses as you would on your strengths. And also you might want to add, if you're working on it, that you're working on it. Okay, so supposing your English is weak, for example, you say that my English is slightly weak and I fumble sometimes, but I'm working on it. My neighbor is very good in English, so I keep talking to her all the time, and I see English news and I read English papers. And, you give that there is a weakness, I'm aware of it, but I'm trying to overcome it. Right? Thank you, sir. Yeah. Thank you once again, Rupen sir. I now request Dr. Rupa Deshmukhya to kindly take over. Thank you, Reena. Good evening, everyone. It is my privilege to propose vote of thanks on behalf of Bhavan's Hazarimal Somani College of Arts and Science and Jairam Das Patel College of Commerce and Management Studies. I, Dr. Rupa Deshmukhya, extend my heartfelt gratitude to all those who made this session possible. At the outset, I express my gratitude to the management of our college for granting us the permission to conduct this vocational guidance webinar. I'm extremely grateful to our resource person, our alumnus retainer, Mr. Rupen Doshi, for an insightful session on interview personality and CV writing. Sir, this was truly an engaging session, and I can't thank you enough for the way you have conducted it, and you've shed light on all these significant soft skills, I may say life skills in a span of an hour. And our students have got very effective tools to face the interview, to write a proper CV. We've given them the difference between the different terms, and these valuable inputs are going to assist them in their professional endeavors. I'm certain they are looking forward to connecting with you offline very soon, so that we have such stimulating discussions in future as well. So, right, students, I'm sure you are feeling quite enriched after listening to Sir, and you have benefited from his expertise.
I also thank our principal, Professor Dr. S.V. Rathod, for his unwavering support in organizing such activities, and our IQAC coordinator, Dr. Manjusha Patwardhan, for her tireless efforts, and all the IQAC members for their unconditional support. So thank you all, and moreover, all these students, I appreciate your enthusiasm, all those who connected with us virtually today. We are happy with your response, and we look forward to your participation in all our future events. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Always enjoyable with the Bhavan's family. Bye. Bye.